जैसे ही आप ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे, आपको कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। एज हियर यू कैन सी, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, हाय अजय, थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट माइक्रोसॉफ्ट। सो हाय एवरीवन, जो आज की जॉब अपडेट है दैट इज कमिंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम। बेस्ट पार्ट वर्किंग इन द माइक्रोसॉफ्ट इज हियर यू आर गेटिंग मैनी बेनिफिट्स। ओके, सो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना टू अंडरस्टैंड कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है and to get the confirmation mail from the company. So let's begin with today's job update. Microsoft is hiring for the post of software engineering and the salary here you can expect is up to 10 LPA. So both fresher or experienced candidate can easily apply for this application. Though this is going to be a completely work from home, but यहाँ पे आपको once in a while ऑफिस में विजिट करना होगा for a meeting or for some work. So the office location is going to be Bangalore and Hyderabad. And the best part working the Microsoft is here you are getting many benefits, like you are getting the health insurance and the Microsoft discount coupons. Okay, as well as you will be getting the chance to connect with the like-minded people, and you will be getting the educational resource from where you can upgrade your skills on day-to-day basis. ओके, सो लेट्स सी इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर फ्रॉम बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और अदर डिसिप्लिन, देन यू गैस कैन ईजिली अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन। ओनली द रिक्वायरमेंट इज यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ C++ और जावा। अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स and operating systems or design patterns and related topics. So if you have these skills, then do add these skills in your resume, like C++, Python, Java, like data structure, algorithms. Okay, so that the chances of your resume to get shortlist will be higher. And most important is जो कि हर organization में requirement होती है, that is your good communication skills. Okay, so let's see इसमें आप कैसे apply कर सकते हैं. So just scroll down. So here you will see how to apply for Microsoft. Just scroll down and click here to apply. So I will put the link in the description as well as in the comment section. वहाँ से आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक Amazon, Accenture और इंडिया मार्ट में अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जाके अप्लाई कर लेना। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन as well as in the I button. Okay, so let's fill out the application for Microsoft. Just click here to apply. You will be redirected to the official page. Here you can see job.careers.microsoft.com and यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ओके, सो क्लिक ऑन अप्लाई। यहाँ पे आपको फर्स्ट साइन इन करना होगा, तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, गूगल और फेसबुक से आप साइन इन कर सकते हैं। सो आई विल चूज गूगल। ओके, तो एक बार वंस यू साइन इन, नाउ हियर क्लिक ऑन अप्लाई। Okay, so now you need to fill out your application form. So here first you need to write your name, your last name, your email ID, your address and your phone number, and now click on yes. So check both boxes, click on save and continue. Now here work authorization, so यहाँ पे are you legal to authorize to work in India? From here select yes, no. Okay, and यहाँ पे आपको select yes कर लेना और यहाँ पे no and click on save and continue. Verify information. Okay, save and continue. Okay, so after this you will get some questions. So here you need to answer it as per your convenient. Like, are you currently employed by a government or government agency? Select no. Have you signed a non-complete or non-disclosure agreement? यहाँ पे no. Select no. Have you ever worked in with Microsoft? Select no. If yes, so you have to provide the previous work alignements. आपका जो previously जो ID होगी वो आप provide कर सकते हैं अगर आपने Microsoft में पहले काम किया हुआ है। Okay, so and other things leave as it is and click on submit. After this you will get some job specific questions. यहाँ पे से आप select yes or no कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपको अगर एक्सपीरियंस है इन कोडिंग लैंग्वेजेस लाइक C++ और जावा तो आप yes कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट नो। ओके, सो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सो जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे आपको कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। एज हियर यू कैन सी, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, हाय अजय, थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोजीशन एट माइक्रोसॉफ्ट। ओके, अगर आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाता है यानी मीन्स आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। ओके, वंस यू कंप्लीट योर इंटरव्यू एंड आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, देन प्री बोर्डिंग एंड हायर्ड। ओके, सो दीज आर द स्टेजेस। सो बेसिकली यहाँ पे एक ही पड़ाव है, यहाँ पे टेक्निकल इंटरव्यूज रहेंगे। देयर मे बी 2 or 3 टेक्निकल इंटरव्यूज, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। ओके, सो आपको फर्दर मेल्स तभी आएंगे जब आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगा। सो ट्राई टू मेक योर रेज्यूमे एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट, जो कि रिक्वायरमेंट है जैसे C++, जावा, ये सारी स्किल्स आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं ताकि जो शॉर्टलिस्ट के चांसेस हैं वो बढ़ जाएं। ओके, एंड इफ़ यू हैड एनी अदर क्वेश्चन और एनी अदर feedback, then do let me know in the comment section and I will see you in the next video. Till then, take care, stay safe and bye bye.